का जो इस समारोह का कार्यक्रम है, अति शीघ्र ही हम शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि वो कोविड अनुरूप व्यवहार का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, शारीरिक दूरी बना के रखें, हाँ, दूसरे गेट से बच्चे आ जाएं लेफ्ट फ्लैंक में। You all are requested to please take your seat and please observe the COVID appropriate behavior.
अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, साथियों, अलग अलग स्कूल्स के डीन्स, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, डियर स्टूडेंट्स और ऑनलाइन जुड़े हुए बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो आज यूनानी डे के मौके पर, उसके अवसर पर 2022 के यूनानी डे जिसका शीर्षक Unani reverence of Unani medicine in this present health scenario ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जामिया हमदर्द की जानिब से स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के तत्वाधान में मैं डॉक्टर खुर्शीद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अतिशीघ्र ही हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि और दूसरे जो हमारे कुलाधिपति चांसलर महोदय और उप कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहब हमारे दरमियान होंगे। उसके बाद हम लोग बाकायदा इस सम्मेलन का, इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए, आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। I'll be requesting you all when our chief guest arrives, please welcome one of the legends in Ayurvedic sciences, Jayant Dev Pujari ji, Director General, Central Council for Research in Unani Medicine, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर इदरीस हमाद साहब, हमारे कुलपति प्रोफेसर अफशार साहब अभी हमारे दरमियान हाजिर होंगे। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आप तालियों से और उनके अभिवादन में खड़े होकर उनका स्वागत करिएगा। अकरम साहब, स्टूडेंट्स को यहाँ बैठा सकते हैं ना? डॉक्टर खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सुनाई नहीं दे रहा। मैं देख पा रहा हूं दुबई से प्रोफेसर मोहम्मद कामिल साहब जुड़े हुए हैं। फॉर्चुनेटली he has association with Jamia Hamdard. While I was doing MD, he was our provost, and
दुबई से यूनानी डे सेलिब्रेशन, हर साल वो भारत आते रहे। इस बार ऑनलाइन मोड से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ सर आपका कि आप हमारे साथ यूनानी डे सेलिब्रेशन में हौसला इट इज़ अफजाई माय फरमा प्लेजर। रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद कामिल साहब। बहुत He has शुक्रिया डॉक्टर also खुर्शीद worked साहब। इट्स माय प्लेजर। associated with Central Council for Research in Unani Medicine. और जितने लोग भी ऑनलाइन मोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूनानी डे 2022 में, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय, कुछ क्षण हमारे लिए निकाला है और हमें गर्वान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। प्रोफेसर जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब हमारे भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य की इस भाषा से भली भांति परिचित हैं। वैसे इनकी उर्दू की इस्तेदाद तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये हिंदी के मामले में आज ही मालूम हुआ मुझे। माशाल्लाह। ये हरफन में हरफन मौला है। मौला हमारे कह सकता हूँ हमारे मैं। फॉर्मर वाइस जी। चांसलर साहब भी कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर एम ए जाफरी साहब। नहीं, आपकी तारीफ कर रहे थे कामिल साहब, तो मैंने कहा मैं भी कुछ सवाब-ए-दारैन हासिल कर लूं। सर, आप लोगों का शिष्य होने का सौभाग्य मिला और जीवन में कुछ भी सीखने का जो सौभाग्य मिला और जो मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। नहीं, हमें गर्व है और आप पे। कामिल सर, अगर मास्क हटा के आप कुछ कहें हम लोगों के लिए और जामिया हमदर्द से जुड़ी अपनी यादों के सिलसिले से, तो हमारे लिए ये बाइस इफ्तिखार होगा। मैं अपने ही घर में आया हूँ, मगर अंदाज तो देखो कि अपने आप को मानिंद मेहमान लेके आया हूँ। बहुत मेरा खुश ख्याल सर, है ये बहुत खुश। एक शेर काफी होगा। मेरी अंदरूनी कैफियत को का हामिल है ये शेर। मैं कह ये रहा था कि माशाल्लाह आपकी उर्दू की इस्तेदाद तो मुझे पहले से मालूम थी, लेकिन आज आप जब बोल रहे थे तो मुझे अंदाजा हुआ कि आप भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य की इस भाषा से भी भली भांति परिचित हैं। धन्यवाद सर। भाषाएं दरअसल व्यक्ति, समाज, समुदाय और सभ्यताओं से सिर्फ जुड़ने का एक माध्यम है और मुझे गर्व है कि मैं उस देश का वासी हूं जहां गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में न सिर्फ भाषा बदलती है बल्कि पानी भी बदलता है और ये एक तरह के हमारे आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक विभेदताओं को अनेकता में एकता के सूत्र में बांधता है। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह। इन्हीं परंपराओं, इन्हीं सांस्कृतिक धरोहरों को संजोते हुए हमें इस देश को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। उसमें जाहिर है कि आप जैसे अजीम मुफक्किरीन का, अजीम साइंसदान का, जो देश की मिट्टी से दूर होने के बावजूद भी मुल्क की सालमियत, उसके डेवलपमेंट में, उसकी तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एटम नवाजी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अनकरीब ही सर हम लोग शुरू कर लेंगे। हमारे मेहमानान आ चुके हैं, बस 2-4 मिनट में ही हमारे साथ वो होंगे। इंशाअल्लाह। तो मैं मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में
से कुछ समय हमारे लिए निकाला है और आज इस सम्मेलन, इस समारोह में तशरीफ लाए हैं।
साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूनानी डे, वर्ल्ड यूनानी डे 2017 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इनिशिएटिव पे हकीम अजमल खान साहब, मसीहुल मुल्क, एक शायर, एक क्रांतिकारी, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हैरत ज़दा होंगे आप कि उन्होंने एक सेशन हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर भी सदारत की थी। तो उन्हीं की याद में 2017 से यूनानी दिवस या विश्व यूनानी डे 11 फरवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। और पूरे फरवरी के महीने में यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चूंकि 11 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं, तो इस पूरे महीने किसी स्टेट में, किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूट में यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। जामिया हमदर्द हर साल अपनी परंपरागत तरीके से यूनानी डे सेलिब्रेट करता रहा। इस वर्ष जो हमारे जामिया हमदर्द के जरिए मनाया जाने वाला यौम यूनानी है 2022, उसका उन्वान रेवरेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन इन प्रेजेंट सिनारियो, जिसका भावार्थ या जिसका सब्सटेंस ये है कि आपने देखा होगा कि कोविड महामारी सार्स CoV-2 के पैंडेमिक के दुनिया भर में फैलने के बाद और कोविड महामारी का इलाज आप सभी लोग वाकिफ हैं, साइंस के लोग हैं, कि कोई बहुत ही एप्रोप्रिएट और श्योर शॉट ट्रीटमेंट अब तक अवेलेबल नहीं है। सो दुनिया की जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां रही, ट्रेडिशनल सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन रही, उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस किया कि हम कोई ऐसा रजीम, ऐसा तरीका इलाज तलाश करें जिससे कि इंसान की जो तबीयत है, जो उसकी इनेट पावर है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन हो सके और वो कोरोना जैसे मूजी वायरस से इंसानों को दिफा करने में अपना अहम किरदार अदा कर सके। सो कोविड महामारी के आने के बाद यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेदिक पद्धति, योगा, सिद्धा और आयुष के जितने भी घटक हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, उन्होंने देश भर की जो कोविड-19 की माइल्ड टू मॉडरेट स्टेजेस रही हैं कोविड-19 की, उसको न सिर्फ ट्रीट किया बल्कि कोविड महामारी से होने वाली मौतों को किसी तरह से कम करने का अथक प्रयास किया। उसी प्रयास का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने यूनानी, आयुर्वेदा और जो दूसरी आयुष के कंपोनेंट्स हैं, सिद्धा, योगा, सोवा रिगपा, इन सबों के साथ मिलके देश में ही नहीं, दुनिया में भी ऐसे पद्धतियों का विकास करने का सोचा। तो इसलिए हमें लगता है कि दौरे हाजिर के तकाजों के एतबार से ये हम पर लाजिम हो जाता है, बल्कि यूनानी फ्रैटर्निटी और साइंटिफिक कम्युनिटी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड, डॉक्यूमेंटेड एक मेडिकल सिस्टम करके प्रोपगेट करें। हालांकि ये सिस्टम दुनिया के हर हिस्से में किसी न किसी रूप में, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कहते हैं, वो राइज है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया की तकरीबन 75% आबादी आज भी कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव सिस्टम या ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तारीख के औराक, अगर आप पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा
और डेटा जो आज के दौर में अवेलेबल है, उससे ये बातें साबित होती हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी और जो दूसरे घरेलू तरीका इलाज हैं, जो निदान की पद्धतियां हैं, उनके योगदान को किसी तरह से नकारा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को एक विरासत और एक ट्रेडिशनल नॉलेज से एनरिच करें और रेशनल और एविडेंस के साथ उसे दुनिया के सामने लाएं, क्योंकि जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति या आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो कारणों का निवारण नहीं करती। मैं एक यूनानी का छात्र हूं, तो मुझे पता है वो लक्षणों का निवारण करने में और त्वरित उसका निदान करने में सक्षम है, लेकिन तिब्बत यूनानी की खासियत यह है कि इसका एक नजरिया तबीयत और नजरिए असबाब सित्ता जरूरिया, 6 एसेंशियल फैक्टर्स, ये इतने शानदार हैं कि अगर आप इनको होलिस्टिकली समझने की कोशिश करें और अप्रोच करें, तो यकीन जानिए कि आप बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का इलाज बहुत कम या बिल्कुल भी साइड इफेक्ट दिए हुए मरीज का इलाज कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो अमराज आज के दौर में मुतासिर कर रहे हैं या रोगों का कारण है, वो हमारी जीवनचर्या से या मामूलात जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो भी बेइतदाली है या डिविएशंस हैं, उनकी वजह से होने वाले रोग हैं। सो इस पर हमारे लिए न सिर्फ एक चैलेंज है, और बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मानवता की सेवा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्रयासों को और तेज करें, जिससे कि जो एलिंग सोसाइटी है, एलिंग ह्यूमैनिटी है, जो मुख्तलिफ अमराज से, बहुत सारे रोगों से मुतासिर है, उनका हम इजाला कर सकें, उनका निदान कर सकें, उनका उपचार कर सकें। हमारे अतिथि आ चुके हैं, सब लोग एक साथ ही आएंगे, चांसलर साहब, चीफ गेस्ट, सब लोग एक साथ आएंगे। तो इसलिए आपकी प्रतीक्षा, आपके धैर्य के लिए मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत ही मसरूफ हैं, उसके बावजूद भी आपने अपना वक्त निकाला, इसका शुक्रिया अदा करता हूं। और मीडिया के बहुत सारे बंधु, प्रेस के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने आज जामिया हमदर्द में यूनानी दिवस 2022 के अवसर पर shortly we'll be having our guest, our chief guest, our guest of honor, our respected and honorable Chancellor Hamad Ahmed Sahab, esteemed Vice Chancellor Professor M. Afshar Alam Sahab, Registrar Sir सैयद सऊद अख्तर साहब, सभी लोग बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्द हमारे साथ होंगे और इस सभा को, इस सभागार को गौरवान्वित करेंगे। तो जो लोग भी दिल्ली के आयुर्वेदा यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग के प्रिंसिपल साहब को मैं देख पा रहा हूँ, वो तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रिया। डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आयशा रजा वहाँ से तशरीफ लाई हैं, उनका शुक्रिया। और आप सब हमारे परिवार के, आप हमारे विश्वविद्यालय के परिवार का हिस्सा हैं, और मुझे खबर है कि आपकी बहुत सारी मसरूफियात होंगी। मैं खुद भी बहुत मसरूफ हूँ, मेरे सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद भी यूनानी दिवस सेलिब्रेशन, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ये लोगों को बता पाएं
कि 2017 में जिस दिन का शुभारंभ किया गया उसकी महत्ता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस क्या है, जिससे कि हम नौनिहाल तिब या कारवान तिब को अपने कंधों पर, मजबूत कंधों पर आगे ले जाने वाली जो हमारे पास वर्कफोर्स है, स्टूडेंट्स हैं, शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो एक बहुत ही अच्छा सुलभ इकोनॉमिक निदान या निदान का उपाय राष्ट्र को दे सकें, राष्ट्र को समर्पित कर सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें। और विश्व यूनानी दिवस के इस अवसर पर जामिया हमदर्द के सभागार में परम आदरणीय श्रद्धेय मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, हमारे कुलाधिपति हमाद अहमद साहब, कुलपति महोदय प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहब, कुल सचिव रजिस्ट्रार साहब आ गए हैं सभागार में।
अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। परम आदरणीय श्रद्धेय मुख्य अतिथि वैद्य जयंत देव पुजारी जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद पद्धति आयोग भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार के महानिदेशक प्रोफेसर आसिम अली खान साहिब, कुलाधिपति चांसलर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हम्माद अहमद साहिब, माननीय आदरणीय कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहिब, कुल सचिव सैयद सऊद अख्तर साहिब, प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहिब, जो आयुर्वेदा और यूनानी संस्थान करोल बाग के भेषज विज्ञान द्रव्य गुण विज्ञान के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर सैयद आरिफ जैदी साहब, जो डीन संकाय अध्यक्ष हैं स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, और सभागार में उपस्थित अलग अलग संकाय के अध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षकगण और ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए बहुत सारे देश और विदेश से जुड़े हुए हमारे सहभागी, डियर कोलीग्स, डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज विश्व यूनानी दिवस 2022 के इस सम्मेलन में, इस समारोह में हम आपका दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस आशा के साथ कि यूनानी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और देश की जितनी भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, आप सभी लोगों के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में, नेतृत्व में राष्ट्र के चिकित्सा सेवाओं के लिए और वैश्विक स्तर पर भी इन आयुष की चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार के दिशाओं को तय करेंगी, उसकी दशा को तय करेंगी। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के सेमिनार का, जिसका शीर्षक रेवरेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन इन प्रेजेंट सिनेरियो, उस पे बातचीत करें, मैं आमंत्रित करता हूं समीर हुसैन को कि वो इस सभा का शुभारंभ कुरान की आयत से करें और उस ईश्वर की, उस खुदा की, उस अल्लाह की, गॉड की स्तुति करें जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, महान है, अनंत आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष का रचयिता है, समीर हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा इज़ा सजा मा रब्बुका वमा कला वलल فيعطيك ربك فترضى ألم ووجدك في،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वज़्ज़ुहा, कसम है आफताब की रोशनी की। वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की जब वो छा जाए। मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला, ना तो छोड़ दिया तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब ने, और ना ही नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और बेशक आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए दुनिया से। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब अता फरमाएगा तुम्हारा रब इतना कुछ कि तुम खुश हो जाओगे। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या नहीं पाया उसने तुम्हें यतीम फिर ठिकाना दिया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और पाया तुम्हें नावाकिफ और सीधा रास्ता दिखाया। और पाया तुम्हें तंग दस्त तो गनी कर दिया। फअम्मल यतीम फला तकहर, बस ये कि जो हो यतीम तो ना सितम करना। वअम्मा साइला फला तनहर, और ये कि जो हो मांगने वाला तो ना झड़कना। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और ये कि जो नेमत है तो तुम्हारे रब की तो उसका बयान करते रहना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ही का कलाम सच्चा है। बहुत शुक्रिया समीर। हमदर्द एक समर्पण का भाव है। हमदर्द दुखियों के पीर के हरने का नाम है। हमदर्द हमारे मरहूम मग़फ़ूर पद्म भूषण हकीम अब्दुल हमीद साहब का अजीम ख्वाब है, जिसकी तर्जमानी करने के लिए मैं दावत देता हूं यूनिवर्सिटी तराना टीम का कि वो आए और हमदर्द का कुल गीत हमारे सामने पेश करें।
धन्यवाद. Thank you. University Tarana team was reciting a beautiful creation by one of our senior faculty, Professor Rashidul Zafar साहब. इसके बाद आप सभी लोग यूनानी जगत इस बात से भिज्ञ है कि 2017 में माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2017 से विश्व यूनानी दिवस मनाया जा रहा है. और ये सेलिब्रेशन हर साल 11 फरवरी को मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब, एक पोएट, एक कवि, एक जंग आज़ादी के सिपाही और एक मशहूर व मारूफ यूनानी चिकित्सक और एक राजनेता, एक स्कॉलर, और साथ ही साथ ये आश्चर्य की बात है कि हकीम अजमल खान साहब भारतीय संस्कृति के अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महान परंपरा के निर्वाहक रहे. और इसी सिलसिले में ये आश्चर्य होता है, उनका जीवन दर्शन अगर पढ़ा जाए तो उन्होंने एक सत्र
हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर भी उस समय और उस काल में उसकी अध्यक्षता की थी। आज की और उस समय की जो विषम परिस्थितियां थीं, जिसमें कि आयुर्वेदा और यूनानी को बहुत सारे चैलेंजेस तब भी थे, आज भी हैं, इसकी स्वीकार्यता को लेके, इसके अंदर रेशनल अप्रोच को लेके, जिसके लिए सरकार बहुत दिन रात प्रयास कर रही है और आपका आयुष मंत्रालय उसके लिए अडिग है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके शोध के लिए। तो हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे दरमियान हमारे अतिथि हैं और उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए और स्वागत भाषण देने के लिए, स्वागत वेलकम एड्रेस देने के लिए मैं दरखास्त करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं हमारे स्कूल के डीन प्रोफेसर सैयद मोहम्मद आरिफ जैदी साहब से कि औपचारिक रूप में स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ जैदी साहब। Most respected chief guest, Vaidya Jant Pujari ji, Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, guest of honor, Professor Asif Ali Khan, Director, Central Council for Research in Unani Medicine, respected Janab Ahmad Ahmed Sahib, Chancellor, Jamia Hamdard, respected Professor M. Afshar Alam Sahib, Vice Chancellor, Jamia Hamdard, Professor Muhammad Idris Sahib, ex-principal, ANU Vidya College, Karol Bagh, University of Delhi, Mr. S.S. Akhtar Sahib, Registrar, Jamia Hamdard, Deans of the different schools, heads of the departments, professors, my esteemed colleagues, distinguished guests, my dear students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good morning, namaskar. It is my privilege and pleasure to welcome you here on behalf of the organizers and the School of Unani Medical Education and Research. We are delighted to have one and all present here on the Unani Day celebration. Thank you for your participation. The Unani Day, which is now International Unani Day, is celebrated not only in India, but all over the world. Many countries like Iran, UAE, South Africa, Sri Lanka, etc., where there are various Unani medical colleges, have now started celebrating Unani Day in their countries. As we all know, Unani Day is dedicated to Hakeem Ajmal Khan, whose birth anniversary is celebrated as Unani Day every year. Hakeem Ajmal Khan was the pioneer of Unani medicine in modern India. He contributed to the Indian national movement as a freedom fighter and an associate of Mahatma Gandhi. Remembering the legend and the visionary late Hakeem Abdul Hamid Sahib on this Unani Day, and how with his great vision, he put forward the idea of bringing together both the system of medicine, allopathy and Unani, under one roof, and established Mujidia Hospital along with several other institutions, including this very institution, Jamia Hamdard. Various countries across India, across Asia, Africa, and South America are now adopting traditional ways of treatment along with the Western ways. The Unani system of medicine is one of the oldest systems of medicine, and the existence of the system till now itself is evidence of the validity
of its principle. However, the essence of any science is progress based on a continuous quest for new knowledge through research, development, and never applications. Unani medicine too should not be an exception to this. Unani system of medicine has passed the test of time by surviving for thousands of years. For generations, people have accepted, and that is why even in the hyper-competitive medical science field, it has continued to exist. Although approximately 80% of people today depend upon herbal medication in some or other form as a component of their primary health care, according to the WHO. The herbal medicine can potentially contribute to the advancement of healthcare. Many major challenges must be overcome prior to the successful integration of herbal medicine into mainstream medicine. Some needs a fresh way of innovation to play a requisite role in the newly emerging era of medical. A rational approach to apprehend and extrapolate the basic concept of the system must be regained to build a progressive future. We need to challenge assumptions, try to reinterpret meanings in modern scientific terms, and most importantly, dare to experiment to generate fresh evidence. Indeed, for the incorporation of safe and effective herbs into the medical system, in reality, more researchers and doctors need to be trained modern medicine and herbal compendium that has been accumulated since ancient times. Additionally, to establish credibility for herbal use in the modern settings, experience-based claims from herbal medical doctors must be transformed into evidence-based claims, and standardizing treatment on the basis of herbs must be settled. These issues are resolved, the prospect exists for widespread use of herbal medicine as a safe, effective, and affordable form of healthcare. In today's time, when we are hit hard by a worldwide pandemic caused by the COVID-19 virus, the shift to the traditional way of treatment and using it as a precaution against the virus serves as a reminder about the importance of Unani medicine. Unani medicine is a gift from our ancestors, and we should strive to preserve it. I believe the ancient knowledge combined with modern research can have immense potential in the field of medical science. It is my firm belief that Unani medicine is capable of offering the right solution to various health challenges that the nation is currently facing. I would like to conclude by thanking all the participants once again for being with us either offline and online. Jai Hind. Thank you very much. थैंक यू सर। एक रिवायत है कि हम अपने अतिथियों का विनम्रता के साथ अभिनंदन करने के लिए और जामिया हमदर्द में उनके शुभ कदमों को संप्रेषित करने के लिए मैं आग्रह करता हूं अपने टीम के सदस्यों से कि इस सेगमेंट में हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, की नोट स्पीकर, चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब को प्लांटर पेश करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहब से विनम्र आग्रह है कि वो हमारे मुख्य अतिथि वैद्य जयंत देव पुजारी जी का स्वागत प्लांटर से करें।
यूं तो फूलों से इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन जामिया हमदर्द की रवायत है कि वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले और स्वास्थ्य की संरक्षा करने वाले पौधों से स्वागत करें अतिथियों का। मैं डीन स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन से आग्रह करता हूं कि वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर DGCCREM भारत सरकार का स्वागत प्लांटर से करें। हमारे चांसलर साहब को प्लांटर देने के लिए मैं आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन है हमारे हर दिल अजीज वाइस चांसलर शेखुल जामिया प्रोफेसर अफशार आलम साहब का कि वो उन्हें प्लांटर पेश करें। डॉक्टर उस्मा बानो, डॉक्टर मोहम्मद अकरम, सीमा रानी साहिबा इस मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर मोहम्मद अकरम साहब को कि वो हमारे हर दिल अजीज मोहतरम मुअज़्ज़ज़ शेखुल जामिया कुलपति महोदय को प्लांटर पेश करें। डॉक्टर सीमा रानी जी, जो कि जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक और साहित्यिक संयोजिका हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के कीनोट एड्रेस प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब की शान में प्लांटर पेश करें। और इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए जामिया हमदर्द की मोहब्बतों की गमाज बसंती रुत का जाना, लेकिन माहौल में अभी भी खुनकी का असर है, उसका इजहार बल्कि अपनी मोहब्बतों की हरारत का इजहार करने के लिए हम अपने मेहमानान को शाल पेश करेंगे। उसके लिए मैं मोहतरम जनाब वाइस चांसलर साहब से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे चांसलर साहब को शाल पेश करें। और कुलपति महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय को शाल पेश करें। महानिदेशक केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आसिम साहब को शाल पेश करने के लिए मैं दरखास्त करता हूं अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का। प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब को भी शाल पेश करने के लिए मैं अपने कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं। यूं तो स्मृतियों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये हमारे सानिध्य का, ये हमारे स्नेह का प्रतीक होता है। सो मैं अनुरोध करता हूं कि इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुलपति महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो हमारे चांसलर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मोहतरम जनाब शेखुल जामिया प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहब से दरखास्त है कि वो मेमेंटो पेश करें हमारे चांसलर साहब को। और कुलपति महोदय को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं विनम्र आग्रह करता हूं हमारे मुख्य अतिथि जयंत देव पुजारी जी का कि वो
वाइस चांसलर साहब को मेमेंटो पेश करने के लिए मैं अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो सभी लोग इस रूहे रवा और ज्योति को डायनेमिक व्यक्तित्व को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। और मैं आग्रह करता हूं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद आरिफ जैदी साहब को कि वो विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह दें। प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब की शान में मेमेंटो पेश करने के लिए मैं मदऊ कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर उस्मा बानो साहिबा से। डीन स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से मैं दरखास्त करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमारे कुल सचिव महोदय प्रोफेसर सैयद सऊद अख्तर साहब की शान में मेमेंटो पेश करें। और इसी क्रम में, इस क्रम के अंत में मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे कुलपति महोदय को मेमेंटो पेश करने के लिए कुल सचिव त्रुटि के लिए मुझे खेद है। आशा है कि आप सभी लोग माफ करेंगे। इस वेबिनार और हाइब्रिड मोड के सम्मेलन को, जिसका शीर्षक रेवरेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन इन प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें आपको ये बताता चलूं मैं कि विश्व के अलग राष्ट्रों से कुछ प्रतिनिधि हमें सुशोभित कर रहे हैं। तो आज की श्रृंखला, इस सम्मेलन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए और मुख्य वक्तव्य देने के लिए मैं प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब से विनम्र आग्रह और अनुरोध करता हूं कि वो कीनोट एड्रेस करें। प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इल्म सैदला, द्रव्य गुण विज्ञान और भेषज विज्ञान, ANU तिबिया कॉलेज से संबद्ध हैं। साथ ही साथ भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की बहुत सारी संगठनों, समितियों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए मैं सर आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जनाब हम्माद अहमद साहिब, ऑनरेबल चांसलर जामिया हमदर्द, प्रोफेसर मोहम्मद शाह आलम साहिब, ऑनरेबल वाइस चांसलर जामिया हमदर्द, वैद जयंत देव पुजारी जी, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, प्रोफेसर आसिम अली खान साहिब, डायरेक्टर जनरल CCRUM, जनाब SS अख्तर साहिब, रजिस्ट्रार जामिया हमदर्द, प्रोफेसर आरिफ जैदी साहिब, डीन सुमेर, distinguished guests, ladies, gentlemen, stars of Jamia Hamdard and star makers of Jamia Hamdard, participants who are sitting over here in this beautiful auditorium and join online from different parts
of country and abroad. At the very outset, I express my gratitude to the organizers for inviting me to deliver a keynote address on the occasion of the Unani Day 2022. I recall my association with Hamdard since my childhood, when I tasted Ruh Afza first time, which is still fresh in my memory. Later on, Hamdard Tibbi College, the erstwhile Jamia Tibbiya at Balli Maran in Old Delhi, way back in 1977, when I got admission in bachelor course of Unani medicine at Ayurvedic and Unani Tibbiya College, Karol Bagh. The same year, Hamdard Tibbi College was affiliated to the University of Delhi, which brought a close relationship with its first batch. I was one of the blessed and luckiest persons who worked with Janab Hakeem Abdul Hamid Sahib. In All India Unani Tibbi Conference, under his presidency since 1988 till his last breath. Janab Hakeem Abdul Hamid Sahib was a towering and unmatched personality in the 20th he is Masiul Mulk Hakeem whose birth come as synonymous great persona of Hakeem Abdul Hamid Sahib was not only confined to the practice of Unani medicine, but a mighty institution of education so big. The Jamia Hamdard, Jamia University was his dream, which was realized in the year 1889. He was indeed the young who took the suffering physically and socially by striking his finger on the pulse. Known Nabbaz. Hakeem Marhum Abdul Hamid Sahib was known as the Nabbaz. And thou alias here, thou alias he, and tried his best to get them impressed with this unique qualities. Honorable Justice late H.R. Khan, Supreme Court, compared Hakeem Sahib with Sheikh Nuruddin Rishi, a renowned Sufi saint of Kashmir. Now come to the topic. The topic, reverence of Unani medicine in present health scenario, is more relevant today. In the backdrop of the conventional medicine, we call popularly as the allopathic medicine, criticized what Ivan Ilyich, a philosopher and social critic, in his popular book, Genesis. It was published in the, so I request all to go through this very small book, hardly 100 pages, so go through and you will know the status and impact of the medicine. The impact of this book dented the repute and respect of allopathic extent.
The current medical health has become a commodity, whereas patient is a customer, doctor designated as health manager, nurse as nursing officer, and treatment has become the intervention. The patient is consulting Google Guru. First, coming before the doctor, patient typed his problem in the box of Google and also consult the WhatsApp Gurukul, WhatsApp University, the e-medicine, e-pharmacy, and e-learning have passed the traditional profession of medical, business, and teaching. Robots are doing surgery. Clinical wisdom is now based on the high-tech diagnostic tools. Human intelligence is being supplemented as artificial intelligence and machine learning. Recently, I think you know, genetically modified pig's heart has been transplanted to a patient, and the transplantation of other organ is the pipeline in this spectacular medical success. The reverence and respect of the medical profession is high, the biggest benefit. On the human side, we see, though they have advanced, but at the human being suffered a lot. The current COVID-19 pandemic wreaks havoc on the people worldwide for the last 2 years with various virus variants. The healthcare system has completely collapsed, not only in India, but in the advanced countries, especially in US and Europe. In India, the second wave of tsunami of COVID-19 pandemic in the summer of 2021, last summer, reminded the terrible summer of the 1918, 1 century ago, when the influenza or Spanish flu created a calamity on millions of people worldwide. It is graphically documented in the novel, English novel written by the Ahmad Ali. So this is very small novel. So please, I request you, if you want the real picture of a pandemic, to go through this novel in which the 1918 influenza pandemic was described. A popular novel set in the old Delhi during the early 19th century. The people at that time, 1 century ago, the people of Delhi rushed to the Sharif Manzil. Sharif Manzil is a place of where the Hakeem Admiral practiced. His matab was situated in the Sharif Manzil in Ballimaran. You all know. The people of Delhi rushed to the Sharif Manzil for seeking support from the Masihul Mulk Hakeem Admiral Khan Sahib. He treated huge number of patients during the pandemic. Among the patients, a number of leading practitioners of allopathic system. This was mentioned in the Hazik. All the Unani students who have consulted the Hazik book, which is a compendium of the Khandani Sharifi's physicians, very nice book. So in that book, you will find this episode under the heading of Nazlao Zukam Babai. The Unani system holds immense respect and reverence in the society. Since prehistoric times, the ethics were considered as a significant part of medical profession. The code of Hammurabi, proclaimed by the Babylonian king Hammurabi, is a glaring example. Similarly, the ethical codes were prevalent and enforced in Indian
Chinese, Egyptian, Greek, Roman society, the Charak Samhita, Sushruta Samhita, and Kautilya, Arthashastra. These three books, very ancient books, are elaborately mentioned the ethical codes not for the physician, but for the paramedics and patients. The emphasis on medical ethics by the Arabs raised the dignity of Unani medicine to the highest level by incorporating the directives described in the Holy Quran and Hadith. As evident in Unani classical literature, each and every philosopher attempted the medical ethics. For example, Al-Rahabi, Abu Yaqub Ishaq bin Sulaiman, Israeli, Abu al-Hasan bin Rizwan, Sayyid bin al-Hasan, Abu Bakr Muhammad Zakaria Razi, Muhammad bin Ahmad, etc. The medical ethics and moral obligations are exclusively mentioned in the Ibn Khaldun's Muqaddimah. Perhaps you know the Muqaddimah, in which you will find the ethics of medical profession, besides other profession also. This is not a medical book. And Nizami Aruzi's Chahar Maqala. It is worth mentioning that medical ethics was one of the dearest topics close to the heart of Hakeem Abdul Hamid Sahib, who wrote many articles on this subject. For example, medical ethics in Islam, a comparative study of medical ethics in different systems of medicine, Unani system of medicine, issues and development, etc. These articles were published in the reputed journals such as Studies in Philosophy, Studies in History of Medicine and Science, and Studies in Islam. The studies series of journals was published from earlier by the IHMMR, which was the nucleus of this university, and later on it was these journals were continued by the Jamia University. The reason I don't know, these journals were stopped to publish. Right now, I request on this occasion to our Honorable Chancellor and Vice Chancellor to restart these journals. These journals very well quoted, well cited journal, not in India but abroad. The moot question arises: why does medicine hold reverence and respect? The answer is not easy, because reverence is inherent from the soul, rules it, and respect is commanded and gathered from other hearts. दूसरे के दिल से. However, it requires a great deal of soul searching. We should think about the broken value system in terms of inheritance and carry forwarding the values inherited from successive generations and handing down to the next generation. It is the need of the hour to develop a culture of respect towards all stakeholders of medical profession, healthcare system. First, we, the physician, heal thyself. The culture of respect starts from ourselves as a physician. The physician should be demystified from demigod to a human being with empathy and compassion. The patient is not a case. We call it a case. A case aaya hai sahab ye. In our study, we mention a patient as a simply case, not a human being, as a case or as a subject in criteria of exclusion and inclusion. Actually, the patient is an attention seeker.
The position of the physician and status of the patient doesn't matter. The patient has the right to be treated with dignity. The communication matters much. The interpersonal and intrapersonal communications plays a significant role. The next thing is the resilience. Resilience is another approach to overcome this problem. It can be learned and practiced. It empowers to cope, adaptively to recover and repair the broken value system. It is the popular belief that Unani physicians are more empathic, more listener than those of allopathic. Hence, they hold more reverence and respect among the people. This fact is supported by a number of observational studies published in India and abroad. Last but not the least, it is a challenge to follow medical ethics and moral obligations for maintaining reverence and respect of Unani medicine in the present health scenario. It is our solemn duty to abide with commandments to maintain the high standard of medical ethics. Thus, we can proudly become the followers of Hakeem Admiral Khan and Hakeem Abdul Hamid Rahma, whose tireless efforts make Unani system of medicine a reputed, vibrant stream among the Ayush system of medicine. Thank you for your patience listening. धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमदर्द पीस एम्पैथी फॉर ऑल, अभी हमारे कीनोट एड्रेसी प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब इसी बात पर स्ट्रेस कर रहे थे कि एक मरीज को एक यूनानी तबीब होने के नाते या तबीब होने के नाते हम सबको एक ऑब्जेक्ट नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको एक इंसान, नौ इंसान का रिप्रेजेंटेटिव समझना चाहिए। उसके शारीरिक मानसिक अवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एक शेर के साथ, समय चूंकि हमारे विलंब हो चुका है, तो एक शेर के साथ हमारे केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर मोहम्मद आसिम अली खान साहब हैं। उनको एक शेर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं, इस आग्रह के साथ कि जिस प्रकार से यूनानी चिकित्सा का उद्भव, विकास, उसके अंदर शोध के प्रयास और उसकी दशा दिशा को वो निर्देशित कर रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ पूर्व के जो महानिदेशक प्रोफेसर शाकिर जमील साहब भी हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक शेर के साथ उन्हें इनवाइट करता हूं कि जिस बज़्म में सहबा हो न साकी हो न खुम हो, जिस बज़्म में सहबा हो न साकी हो न खुम हो, रिंदों को वहां फिर भी तसल्ली है कि तुम हो। हासिल था। Assalamu alaikum. A very good morning and namaskar. Thank you so much, Professor Khurshid Saib, for this introduction and this wonderful share. Very Honorable Chancellor, Janab Hamad Ahmad Sahib, Vaid Jayante Pujari Sahib, the Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, very respected Professor Afshar Alam Sahib, the Honorable Vice Chancellor Jamia Hamdard, Registrar Jamia Hamdard, Janab Sayyid Saud Akhtar Sahib, my colleague Professor Idris Sahib, who is the former principal of Ayurvedic and Unani Tibia College, Dean of Unani Medicine Faculty Jamia Hamdard, Professor Zaidi Sahib, my colleagues, Professor Shakir Jamil Sahib is there,
Not only Unani medicine people are there, but there are the people from different faculties. Professor Mehta, you can see, Professor Shahid Ansari Sahib, Control Examination Sahib, Farhan Sahib, I think all of the Rais Sahib, and a very old colleague from Salma Sahib also was there in the hall. My colleagues from different faculties, their students, and all participating delegates. It indeed gives me immense pleasure to be here this morning and to address you all on the occasion of Unani Day 2022, which is being organized by School of Unani Medical Education Research, Jamia Hamdard. A very heartfelt congratulations to the organizers for organizing this event on such an important theme. Again, please accept my heartfelt wishes for this special day. We all know that, as Idrissa was highlighting, that this day is being celebrated on the occasion of the birth anniversary of Hakeem Admiral Khan Sahib, who was a great Unani scholar, an educationist, a freedom fighter, and who contributed a lot to the system of medicine, and not only this, but to the political system of the government of India and the country. I pay all my Taji Aqidat to him. I also pay my respectful homage to the founder of this esteemed university, Janab Hakeem Abdul Hamid Sahib, Marhum Maqfoor. We all know that we are standing today here only because of his dreams and visions. I have been privileged when I was young in this institution. I had the opportunity to meet him and to be around him and to have his blessings. I'm very thankful to this institution, which is my own institution, Jamia Hamdard, that here, whatever we are able to do in the ministry, particularly Jayendra Pujari Sahib, let me tell you that this is the organization where I was given a lot of opportunities. I learned a lot from this, a lot of lessons. And a lot of challenges were given. And that is the best part of it. And I always feel myself privileged that the leadership of this institution, whether it started from Hakeem Abdul Hamid Sahib Marhum Maqfoor, or the Vice Chancellor, or the elders of this university, Ahmad Sahib Muhtaram Sahib is there, his benevolent presence is with us. Abdul Mueet Sahib was there, let me make him best place in Jannah. I had that privilege that I was given the opportunities to walk and were given the challenges. Those challenges I learned to deal with, and this was a great opportunity I got from this. I'm thankful for that. Ladies and gentlemen, before I start about CCRUM and Ministry of Ayush, one more thing I want to say, that the wonderful leadership which we have today of the Chancellor Sahib, Janab Hamad Ahmad Sahib, and the Honorable Vice Chancellor Sahib and Saud Sahib, I think we are privileged to have this leadership here in this university. And our colleagues are very lucky lot that we have this leadership and handholding and guidance of this group of leaders. And I feel that we shall take full advantage of this leadership to grow in our respective fields. I trust this leadership, and the system trusts this leadership. So this is a wonderful opportunity for all of us to take advantage of the leadership to grow in different spheres of educational and professional, and we achieve those excellences under this leadership. Dear friends, our country is privileged being home to time-tested indigenous medical systems. That is the Ayush systems of medicine, which are being practiced here for centuries. And Unani system of medicine, which is an integral part of Ayush, is a comprehensive medical system that provides promotive, preventive, curative, and rehabilitative healthcare. Unani medicine is a global system that evolved in different parts of the world by imbibing observations and experiments of many civilizations. After getting introduced in India in the 8th century, Unani medicine was further developed by physicians and scholars of India
through the remarkable contributions to take it to the present shape of fully developed science. The Government of India has been providing increasing patronage and funds for multifaceted development of Unani system of medicine. Of course, as well as to other Indian systems of medicine also. Unani medicine is flourishing in the areas of education, research, healthcare delivery, and production of health products and medicines. As a result, the Unani system of medicine today forms an integral part of national healthcare delivery system. And today we can proudly say that all over the world, we are in this particular system of medicine, we are the world leaders. Like in many other spheres of life, we are world leaders as a country. The Central Council for Research in Unani Medicine, which I work these days as a Director General, we call it CCRUM. For some who are not well aware of it, let me give some introduction about our organization there. It's an autonomous organization under the Ayush Government of India, and has over the past 4 decades, more than 4 decades, has emerged as a leading research organization in Unani medicine. In fact, research and development in Unani medicine is by and large in the hands of CCRUM. The research programs of CCRUM mainly comprise of clinical research, including safety and efficacy studies of Unani drugs, validation of the fundamentals in regimental therapies, drug standardization and quality control, survey and cultivation of medicinal plants, and literary research. Information, education, and communication, as well as the human resource development, are also part of the Council's activities in addition to the extension of health services in different parts of the country. Council has achieved significant leads in vitiligo, hepatitis, sinusitis, bronchial asthma, rheumatoid arthritis, psoriasis, eczema, duodenal ulcers, and filariasis. And based on the outcome of research conducted by the Council, various patents have been granted by the Indian Patent Office. 7 patents are already in the pipeline for the IPO. The research carried out by the Council are published in some very reputed national and international journals. The results are also disseminated through presentations in various seminars and conferences. I'm also happy to inform that we are bringing out 2 journals which are published by CCRUM. One is in English, that is Hippocratic Journal of Unani Medicine, and Jahanati in Urdu. And both are listed in UGC K list. The credit goes to Professor J. M. Pudari Sahib for that also. He was in the committee of the UGC K list, and it was his intervention and his hard work that we could achieve this. CCRUM has taken initiative for accreditation of some of the institutions by the National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. We call it NABH. I was talking to the Vice Chancellor the other day that we may also be having this NABH accreditation in Jamia Hamdard Hospital as well. Dr. Idris is part of that organization. One of our institutions where we visited in the last 2 months, 1 month before, that is in Hyderabad. We have one. I still say that I'm doing good work. Government of India considers that, and Government of India, it earlier used to be a central institution, but now Government of India has upgraded that as a national institution. It is also an NABH certified institution. We have a GMP certified drug manufacturing unit at Hyderabad, and another one is also coming up at one of the research institution, that is Regional Research Institute of Unani Medicine, Chennai. In a move to strengthen research facilities at institutions, we have upgraded laboratories at Hyderabad, at Srinagar, at Chennai, and Aligarh with the state-of-the-art instruments. I'm thankful to the Government of India that recently we have one of our institutions in Srinagar, that is a regional research institution, has been granted a status of a center of excellence. And we have been funded a good amount of money and crores to develop their center specifically for the regimental therapies. Under drug standardization program, CCRUM has developed pharmacopoeia standards of 298 single drugs and more than 200 compound formulations.
In a move to strengthen research facilities at the institutions, the council has upgraded the laboratories, as I told you, in Hyderabad, in Chennai, in Lucknow, in Ghaziabad, in Delhi, in Aligarh. Council has also established state-of-the-art facilities for outsourcing analysis of Ayurveda, Siddha, and Unani samples as per parameters laid down by the pharmacopoeia at drug testing laboratories of CCRUM at Chennai and Ghaziabad. We are also outsourcing preclinical studies under DST funded projects at Srinagar and Hyderabad. With the ample government support, we have expanded our infrastructure. We had the infrastructure, the wonderful infrastructure CCRUM has almost every part of the country. We have a presence of almost 19 or 20 states in the country, as north as Srinagar and Kashmir, and as south as Kerala, and as east as Assam. So we have a pan-India presence with wonderful facility. We have people who have the interdisciplinary approach. We have experts from interdisciplinary sciences, whether they're Unani or biochemistry or pharmacology or chemistry or different sciences. And recently, with the wonderful support of the government of India, I'm thankful to the government that we have submitted many proposals and they have been through. Of late, we have in Ghaziabad, just next to us is an NCR, and a very prime location in Ghaziabad, near CBI Academy. We have been given almost 9 acres of land where we have developed a wonderful facility of almost 360 crore rupees by Government of India. That facility is already there, and very soon it is going to be operational. It is almost complete. We have a CCRUM. We are coming up with one wonderful faculty and facility at Assam, Silchar. It used to be a small center we used to have. With the help and assistance of and support of Government of India, we have developed it to the Regional Research Center of Unani Medicine, and a very beautiful state-of-the-art developed 4-story building in Silchar we are coming up with. Hopefully next month I'm going to have the building with me for working, to start work. Similarly, we have got one wonderful facility in Mumbai. We were housing in one JJ hospital, it's a tertiary care hospital. Now we have a wonderful facility there, a separate institution, a beautiful building in Navi Mumbai, where homeopathy and Unani are under one roof, and that we have occupied recently. We have upgraded our Srinagar institution. We have upgraded in very law facilities in our national institution in Hyderabad. We have started a new center in Kerala. We had one, we started one collocation center. We have expanded in Delhi. We have collocation centers in Delhi. We have the presence in tertiary care hospitals in Deen Dayal Upadhyaya Hospital, in Ramanohaya Hospital, in Safdarjung Hospital. Similarly, in JJ Hospital in Mumbai, we are also going to have one collocation center probably soon. We also have wonderful concept. I was discussing with Mufti Sahab was there in the Honorable Vice Chancellor's office, and Vice Chancellor was suggesting at the day that at Hamdard campus also we are going to have a facility of inter-Ayush facility, that is a wellness center, where all the systems will be under one roof. This we already have in the government. In Rashtrapati Bhavan, President House, we have a very good facility where all the systems are under one roof. They are working. Presently, it is for the Rashtrapati Bhavan people who are residing there. But such kind of facilities probably we would be coming up soon also in other parts. We also have very good concept. We have an Institute of Ayurveda in Sarita Vihar in Delhi. There we have, under one roof, we have the presence of all these systems. And all these systems do have a dialogue within while taking any case for treatment. CCRUM, having good infrastructure and expertise in running medicine, has also established linkages with academic and scientific institutions of repute to work together and to leverage their facilities and expertise for the traditional knowledge in scientific language in furtherance of other objectives of the Council. And for this, the Council enters into the dialogue as a collaboration agreements with those organizations. I must mention here that Jamia Hamdard
and CCRUM have a long history of collaboration. I take this opportunity to inform that we have an agreement with Jamia Hamdard to carry out joint activities. Thankful to Honorable Vice Chancellor, and I look forward for expanding the horizons of this collaboration in other areas of mutual interest soon. In collaborative mode, under expression of interest scheme, studies on cancer, dengue, pharmacokinetic studies, or some Unani formulations are also being conducted in the labs of Jamia Hamdard. Thankful to many of the scientists who have joined hands with CCRUM, not only now, but from the past. And some good work has emerged out from the laboratories and expertise of Jamia Hamdard scientists. We would continue this collaboration and hand-holding and joint collaboration. There have been regular exchange of experts and expertise between these two institutions. Summer, that is the Unani Medicine School, over the years has produced top-notch professionals who have a zeal for perpetual learning and are capable of performing well in diverse professional cultural settings. A lot of graduates and postgraduates from Jamia Hamdard are now engaged in my organization, CCRUM, as well. The other reputed institutions where we have the collaborations are Institute of Medical Sciences, Delhi, certain other institutes in different parts of the country, NIPER in Hyderabad, Invest India, that is Agni. And besides, the Council has collaboration with numerous other leading research and scientific organizations under this expression of interest scheme. At international level also, we have expanded. We have engaged in fruitful dialogue with countries like South Africa, Iran, China, United States of America, UK, Israel, Greece, Bangladesh, Sri Lanka, and 3 more countries. Recently, an academic chair we had established in the University of Cape Town in South Africa, where a professor was also deputed for 3 years for promotion and propagation in the United States of Medicine. We have also established one academic chair in Bangladesh, of the University of Bangladesh. We have signed an MOU, and that MOU has been extended for another 5 years. We also have an MOU with Tajik State University in Tajikistan, and 2 years before, it was signed on behalf of CCRUM by Honorable President of India, who signed that agreement with the President of Tajikistan on behalf of CCRUM. We are thankful to the Honorable President of the Government of India for that. We also visited Iran, and we have been to, me and Secretary Sahib were there in the delegation, official delegation. We had dialogue with the Persian and traditional faculty there, with the faculty members of Tehran University. We signed in MOM, that is the minutes of meeting there, for mutual cooperation in the field of traditional medicine. Our country has been, ladies and gentlemen, passing through an unprecedented health challenges during the COVID-19 pandemic. And let me put in record that Ministry of Ayush has played a very great role by engaging all the research organizations, stakeholders of indigenous medical systems to address this health crisis. Prophylaxis and immunity enhancement are believed to be the strength areas of Unani medicine, and Unani scholars have emphasized certain drugs and measures during the outbreak of epidemics and pandemics. CCRUM, under the guidance of Ministry of Ayush, undertook various activities and measures to check the spread of pandemic by creating awareness, advising preventive measures, and providing prophylactic drugs. The multifaceted approach of Unani interventions significantly contributed in combating this pandemic. CCRUM also conducted many COVID-related research projects. We initiated clinical studies in different Unani regimens as prophylaxis and add-on interventions to study the impact of Unani medicine in high-risk population, in quarantine cases, and hospitalized SARS-CoV-2 tested positive, asymptomatic, and mild to moderate symptoms. Similarly, a population-based prospective study was conducted by 6 of our institutions: Lucknow, Srinagar, Mumbai, Aligarh, Delhi, and Bangalore. It was conducted on almost 40,000 patients, 20,000 in control group. Similar studies of prophylactic interventions on Unani medicine on high and moderate risk population of COVID-19 was conducted at Delhi. An add-on study entitled a prospective interventional case control study to observe the assess the safety and efficacy of Unani regimen
in preventing the progression of severity of disease in hospitalized SARS-CoV-2 patients were also conducted in Colonel Bakhtiyar College. A similar study has also been conducted at Safdarjung Hospital. We also conducted certain in silico screening of different Unani formulations against SARS-CoV-2 in one of our institutions at Chennai with collaboration with Sri Ramachandra Institute of Higher Education Research in Chennai. In this study, the interactions of phytoconstituents present in 4 Unani formulations was computationally assessed against 2 SARS-CoV-2 proteins, the spike growth protein and main protease, and found to be effective in binding energy. Pharmacopoeial monographs of Ayush Dushanda has also been developed. The study was conducted at RM Chennai and DSRI Ghaziabad, both of our CCRM institutions. And in this study, standard operating procedures for the method of preparation of formulation and pharmacopoeial standards were developed. Similarly, pharmacopoeial monographs of Unani Dushanda has been developed. Unani Dushanda, we all know, consists of 3 ingredients, that is Vaidana, Unnab, and Sapista. And this study was conducted at one of our institutions at Chennai. So many activities have been taken up by CCRUM in the last few years. As far as the government is concerned, from this platform, let me tell you that many platforms in Vigyan Bhavan and other institutions I have been speaking, that whatever the projects and proposals I submit for the propagation of our system and the expansion of Unani system of medicine to the ministry. And I'm thankful to the honorable ministers and the secretary and special secretary and leadership there, that all those products, not only them that I receive the hand holding and completion of them, those projects, but also I get a lot of guidance to start some more new projects, which we have been doing. So whatever I have, in a snapshot I gave you, whatever small things I told you about, that many more activities are happening under the leadership, present leadership of the ministry. And for that, me and we are thankful on behalf of the Unani fraternity. I'm thankful to our Jayant Pujari Sahib. He's a wonderful gentleman, and he's a leader who is having the National Commission chairperson. I have been privileged to work as a member of when CCIM was dissolved last year. So Government of India constituted one and gazetted one notification as a Board of Governors. I was one of the members, and he was the chairman president at the time. And the commission is there now, and he's the chairman, and these days I am also a member in that. So he has always been hand-holding. We discuss many issues with relation to the development of Unani medicine, how to bring it forth, what are the issues and concerns which we keep on discussing with him, and he is positive. And I'm thankful to you, sir, that from this platform that you have always been positive and providing that. I think one more thing I would say, that is a wonderful Unani faculty here, and recently all the desired and required promotions have also been done. We have no reason why we shall compromise on the quality, particularly with this leadership which we have of Honorable Chancellor Sahib and Honorable Vice Chancellor and others, elders of this institution, that we take the full advantage of this, particularly the Unani medicine, because I have been discussing with, and I had an opportunity to go, we know each other for the last 20, 30 years, Ashar Sahib, but we had an opportunity to travel together. Many things were discussed, and he has a huge inclination to develop the Unani system of medicine. So I think our colleagues in faculty, they shall take full advantage of this leadership. And I hope that we will grow. We have grown, and we will grow more scientifically, more professionally. As far as the projects are concerned, many projects are already going on with some of the scholars of this institution. I request and urge all my colleagues who are very learned colleagues in Unani medicine faculty, with the right good projects. May I request the Honorable Vice Chancellor to have one seminar or one webinar or research writing or proposal writing, particularly for our faculty members of Unani medicine, so that they can come up with those ideas and come up with some innovative ideas and they can submit the projects like to BST and other institutions to CCIM as well. And we're looking into that. So we have many projects already going in collaboration like other institutions with Jamia Hamdard also. We would also love to have some good projects from the Unani faculty as well. I'll not take much time because already we are late, I think. And to conclude, I must say that Unani medicine is a promising area
in traditional healthcare system with academia, researchers, and regulators come together and take it to great heights for the benefit of masses. I'm sure that all the esteemed participating delegates are going to benefit from these deliberations. I once again congratulate the Honorable Vice Chancellor Sahib, Honorable Chancellor Sahib, Honorable Vice Chancellor Sahib, the faculty, and the colleagues for organizing this wonderful event, and wish them every success. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू सो वेरी मच सर। वो आए बस में इतना तो मीर ने जाना, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इसी शेर के साथ मैं अपने परम श्रद्धेय माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी को विनम्र आग्रह करता हूं कि वो हमें एनलाइट करें। डॉक्टर जयंत देव पुजारी जी वर्तमान में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के चेयरमैन हैं। इज अ रेनाउंड आयुर्वेदिक फिजिशियन settled at Rana Pratap Nagar, Nagpur, Maharashtra. Graduated in 2000. Graduated in 84 as Ayurvedic physician, and honored with doctorate in 2000 from Pune Vishwavidyalaya. And he owns a hospital at Pune, and he is one of the most renowned physician in there. And we know, without any further delay, because we are running short of time, may I request our chief guest, sir, to enlighten us. Honorable Chancellor, Jamia Hamdard University, Janab Ahmad Ahmed ji, Vice Chancellor, Jamia Hamdard University, Professor Dr. M. Akhtar Alam ji, मेरे मित्र सहकारी और डायरेक्टर जनरल CCRUM प्रोफेसर हसीम अली खान जी, जिनका अभी हमने बहुत अच्छा उद्बोधन सुना, प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस जी, मंच पर विराजमान इस यूनिवर्सिटी के सुमेर के डीन प्रोफेसर SM आरिफ जैदी जी, इस यूनिवर्सिटी के आदरणीय रजिस्ट्रार मिस्टर सऊद अख्तर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी स्कूल ऑफ यूनानी मेडिसिन के विद्यार्थी मित्र और अध्यापक, सभी को मेरा नमस्कार और इस यूनानी डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह यूनानी डे मनाया जाता है हकीम अजमल खान जी के नाम से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ यूनानी के लिए ही काम नहीं किया। आप यदि ठीक से इतिहास पढ़ेंगे उनका, तो उन्होंने सभी भारतीय सिस्टम्स के लिए काम किया। जब अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने आयुर्वेद के लिए भी काम किया। आज ये ठीक है कि आज हम यूनानी डे उनके नाम से मनाते हैं, लेकिन दरअसल उन्होंने सभी जितने भी आज की भाषा में आयुष की सिस्टम्स है, वो उसकी सभी की तरक्की के बारे में उन्होंने सोचा और उसके लिए प्रयास किए। इस यूनिवर्सिटी की जिन्होंने नींव रखी, जिस विजन को लेके वो चले, ऐसे हकीम अब्दुल हमीद साहब जी, इनको भी हमने याद करना चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि जिन्होंने जिस समय उन्होंने इसकी नींव रखी थी, उस समय को आप याद करें। आज तो आपको इतना बड़ा भव्य स्वरूप दिखता है, बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छे काबिलियत रखने वाले वाइस चांसलर यहाँ हैं। उनके नेतृत्व में बहुत सारी चीजें इस यूनिवर्सिटी में चलती रहती हैं, हम लोग सुनते रहते हैं और देश के जाने माने, और मैं ये कहूँ कि विश्व के बहुत अच्छे यूनानी अध्यापन स्थल के नाम से यह यूनिवर्सिटी जानी जाती है। लेकिन हमको
हकीम साहब को इसलिए याद करना चाहिए, ये जो हमको आज दिख रहा है वो उस जमाने में उन्होंने देखा है, इसलिए उनको विजनरी कहा जाता है। ऐसे विजनरी लोगों की भी हम लोगों ने हमेशा ऐसे कार्यक्रम में याद रखनी चाहिए और उनका आदर भी करना चाहिए। यूनानी हमारी सिस्टम है, हमारे देश की है वगैरह, ये तो सब बात हम लोग सुनते हैं। मैं आपको और दो तबकों में मैं बात करूंगा, दो स्तर पे मैं बात करूंगा, एक विद्यार्थियों के लिए और दूसरा शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए। अभी हमने प्रोफेसर हाशिम अली खान साहब से CCRUM ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें के पैसे का पार्ट छोड़ दीजिए, वो गवर्नमेंट देता है, वो और जिस प्रकार से नेतृत्व रहता है उस प्रकार से पैसा बहता है सरकार, उनको बहुत सारा पैसा मिला, बहुत सारी इंस्टीट्यूट उन्होंने की, खड़ी कर रहे वो, आपने करोड़ों में बात सुनी होगी उनकी। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन्होंने किए हुए रिसर्च के काम पर। ये विशेष रूप से कोविड काल में जिस प्रकार से इनिशिएटिव हमने लिए उसको हम लोगों ने ठीक से समझना चाहिए, विशेष रूप से विद्यार्थियों। इसका कारण मैं ये देखता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं कहीं अध्यापक नहीं रहा, ना तो मेरा कोई कॉलेज है। प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि यहाँ जो जानकारी है वो नीचे तक जाने में बड़ी दिक्कत रहती है, और ये नीचे तक जब जाएगी, हमारे प्रैक्टिशनर के पास जाएगी, तब जाके वो समाज में जाएगी। और यह चीज मुझे होती हुई नहीं दिखती, आयुर्वेद में भी होती हुई नहीं दिखती, यूनानी में भी होती हुई। अब इसके कारण का मैं जब खोज रहा था कि इसका कारण क्या है, तो मेरी समझ में जो चीज आई कि हम लोग जो यूनानी के या आयुर्वेद के विद्यार्थी, हम यहाँ यूनानी के रेफरेंस में बोलेंगे, हम लोग जो यूनानी के विद्यार्थी है, हमारी भाषा नहीं बदलती। इस चीज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की बात करने की जो भाषा बदलनी चाहिए वो नहीं बदलती। हम लोग इस जानकारी का कभी भी हमारी बोलचाल की भाषा में उपयोग नहीं करते। हम लोगों ने हाशिम अली खान साहब का भाषण सुन लिया और तालियां बजा दी, बहुत अच्छा भाषण हुआ, लेकिन इन्होंने जो काम किया हुआ है, CCRUM ने जो काम किया हुआ है, वो जब तक हमारे जुबान पर नहीं आता तब तक वो नीचे तक पहुंचेगा। मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप इस बात को ठीक से पढ़िए। ये भाषण तो ठीक है, आज के कार्यक्रम के लिए था, ये जो काम हुआ है उसके बाद में बारे में बहुत से डोसियर और बहुत से रिसर्च पेपर निकले, उसको आप देखिए। जो चीज समझती नहीं अपने शिक्षकों को पूछिए, आपस में चर्चा कीजिए और वो अपनी भाषा में लाई, वो अपनी बोलचाल की भाषा में लाई। ये जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक के हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक यहाँ क्या चल रहा है वो नहीं जाएगा। और फिर से हम लोग जो पेपर में बार बार पढ़ते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है, साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है, साइंटिफिक एविडेंस है, हम उसको पहुंचा नहीं। साइंटिफिक एविडेंस है, हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो मेरी सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि ये भाषण करके मत सुनिए, इन्होंने जो जानकारी दी है वो पोर्टल पे जाके देखिए। आजकल तो एक क्लिक पर सभी चीजें, अभी जैसा मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो यूनानी ने कोरोना के समय क्या कंट्रीब्यूट किया, इसकी जानकारी हमारी जुबान पर, हमारी भाषा में रहनी चाहिए। और ये जब तक भाषा हम हमारी बदलेंगे नहीं, ये भाषा जब तक हम हमारी बदलेंगे नहीं, जब तक हमारी जुबान पर ये सब जो भी काम हुआ है वो आता नहीं, तब तक वो नीचे तक नहीं जाएगा। और आखिर नीचे तक यानी क्या, समाज तक हमको पहुंचना है। ये सरकारी स्तर पर इसकी बात करने से मामला खत्म नहीं होता। रिसर्च पेपर छापने के बाद में इति कर्तव्यता नहीं होती, यानी आखिरी का पड़ाव रिसर्च पेपर छापना ये नहीं है, वो रिसर्च पेपर की जानकारी नीचे तक पहुंचाना, या ये जो मैं जानकारी यूनानी की नीचे तक पहुंचा रहा हूं उसका आधार कोई रिसर्च है, इसकी जानकारी या इसकी आदत हमारे सोसाइटी में डालना, ये एक्चुअली विद्यार्थियों का, नए प्रैक्टिशनर्स का काम। मैं आपको उल्टा उदाहरण देता हूं कि एलोपैथी जिसके बारे में जिक्र किया गया, कोई भी दवाई आती है तो एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ ए कॉमन मैन ये हमेशा रहता है कि इस पर रिसर्च हुआ है, और वो बड़े भक्तिभाव से उसको लेता है क्योंकि उसके दिमाग में।
अब ये कोरोना काल में हमने देखा कई बार कि दवाई आई, वो इतनी ज्यादा पैमाने में इस्तेमाल हुई कि उसका ब्लैक मार्केटिंग होने लगा, और बाद में WHO ने ये कहा कि अभी इसको हम विड्रॉ करते हैं क्योंकि इसका कोई एविडेंस आज के तारीख में नहीं है। मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको वापरा, उसको वापरने के लिए अनुमति दी, उसके लिए पैसे गिने, जब वापरा गया तब उसके दिमाग में यही था कि ये साइंटिफिकली प्रूवन। वैसी स्थिति हमारे यूनानी की होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आखिर में वो ये अनसाइंटिफिक करके विड्रॉल करने की नौबत हमारे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि हमारा साइंस बीच में किसी ने शब्द प्रयोग किया था कि टाइम टेस्ट है। इट इज टाइम टेस्ट। ये जो एविडेंस हम जनरेट करते हैं ना, हम रीवैलिडेट करते हैं। हम नई कोई चीज खोजते नहीं है अभी तक, हम रीवैलिडेट करते हैं। तो हमको ये डर नहीं है कि हम कहीं अनसक्सेसफुल, कभी नहीं। आप विद्यार्थी, मैं जब विद्यार्थी था तब की मैं बात करता हूँ कि मैं जितने साइंटिस्ट लोगों से मिलने की मुझे मौका मिलता था, तो मैं उनसे पूछता था कि आपने लीड लिया आयुर्वेद से, क्योंकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी, आपने एक्सपेरिमेंट किए, जिंदगी लगा दी उसमें, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि आपके पूरे जिंदगी में कितने फेल्यूर रहे। मैं पूरी जिंदगी में आयुर्वेद से लीड लेकर जो एक्सपेरिमेंट जिस साइंटिस्ट ने किए उसमें कितने फेल्यूर रहे, आज तक मुझे कोई मिला नहीं जिसने ये बोला है कि हमने आयुर्वेद से लीड लिया और उसमें फेल्यूर। जब फेल्यूर की बात आई तब कुछ दिन के बाद वही बोलता है कि नहीं, वो मेथोडोलॉजी गलत थी इसलिए फेल्यूर आया, हमने मेथड चेंज की तो वो जो कहा है वो आया। अब ऐसी स्थिति यूनानी। तो इसलिए हमारी तरफ, हमारे लिए ये समस्या है नहीं। हमारी समस्या ये है कि हम उस भाषा में बात करना की आदत हमको डालनी पड़ेगी। और यहाँ जो है कि मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे एक रिजिडिटी सभी चीजों में आते जाती है, वैसे वैसे वोकैबुलरी हमारी बहुत मर्यादित होती जाती है। वो शब्दों का ज्ञान है, शब्दों का जो भंडार है वो सीमित होते जाता है। लेकिन विद्यार्थियों का वैसा नहीं रहता। इसलिए मैं सर्वप्रथम विद्यार्थियों को ये नम्र विनंती करता हूँ कि जो भी आसिम अली खान साहब ने किया उसको आप पढ़िए, उसको समझिए और उसको अपनी बोलचाल की भाषा में वापरना शुरू कीजिए। तब जाके ये जो जानकारी है, ये जो रिसर्च है वो नीचे तक जाएगा और जिसके कारण समाज का हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलेगा। तो ये मेरी पहली विनती। दूसरी विनती जो है वो शिक्षकों के लिए है। शिक्षकों के बारे में मैं बाकी कुछ नहीं कहूंगा, मेरे को सिर्फ उनको मेरी एक ही नम्र विनती है कि नॉर्मली एजुकेशन के सेक्टर में मैं देखता हूं कि सबका मुंह सरकार की तरफ होता है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, फिर पहले CCIM कुछ तो भी करता था, अभी NCIM करने लगा है। कुछ लोग बैठते हैं, करते हैं और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी सभी यहाँ पर सभी यूनानी के शिक्षकों से एक गुजारिश है, एक नम्र विनती है मेरी कि आप खुद 25 साल बाद या 10 साल बाद, 25 साल बहुत बड़े होते होंगे, तो यूनानी के शिक्षा की स्थिति कैसी होनी चाहिए इस पर आपका मत क्या है, अध्ययन के आधार पर इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट डाउन शुरू आपको उसको नोट करना शुरू कीजिए, अपने सहपाठियों से उसकी चर्चा कीजिए, वो ग्रुप में डालिए। इसका कारण मैं बताता हूँ कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि इसका उपयोग क्या है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक संगठन में काम कर, बहुत मजेदार बात है कि क्या उपयोग होता है ये पूछने का। 2011 साल की बात है, तब हम लोगों ने तय किया कि हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं ये सिलेबस ठीक नहीं, ये यहाँ ठीक नहीं, वो वहाँ ठीक नहीं है। हमने कब अध्ययन किया है इसका? तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम इसका अध्ययन करें। अब उन्होंने मुझे बताया इसलिए कि मैं टीचर नहीं था, वो बोले थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव आना चाहिए, बर्ड्स आई व्यू आना चाहिए कि जो उसको इस्तेमाल करता है उसका क्या कहना है। तो मैंने 2-3 साल तक आयुर्वेद की शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। मैं गहरा शब्द नहीं वापरता क्योंकि गहरा अध्ययन करने के लिए 12 साल लगते हैं, उसको मैंने 3 ही साल तक पढ़ा। लेकिन हर एक कागज, हर एक रिपोर्ट बिल्कुल, यानी मैं बताता हूँ आपको, आप में से शायद किसी ने देखा है मुझे मालूम नहीं, उस्मान कमेटी की रिपोर्ट देखी आप, स्वतंत्रता से पहले की रिपोर्ट है, उसमें यूनानी का भी हिस्सा है। बाद में ये बाकी जितने भी उड़ुपा कमेटी आई, ये कमेटी आई, वो 10-12 कमेटी आई, बोर कमेटी आई और बहुत सारी कमेटियां आई हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं ये सब कमेटियों को जानते हैं। इसको आप पढ़िए, मैंने वो सब पढ़ी।
वहां से लेकर तो 2011 में सैम पित्रोदा ने हायर एजुकेशन पर उस समय के प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, उसको भी मैंने पढ़ा। मैंने वहां से शुरू किया। आयुर्वेद क्षेत्र के जितने भी विद्वान थे उन्होंने पुराने समय से जो भी आयुर्वेद की शिक्षा के बारे में लिखा था सब पढ़ा, पूरा जमा किया जखीरा, और मैंने सब पढ़ा। और उसके ऊपर मैं और मेरे एक मित्र है, हम लोगों ने आयुर्वेदिक एजुकेशन पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लीकेशन नाम की एक किताब लिखी जो 2013 में पब्लिश हुई। मेरे एक मित्र है और उन्होंने मुझे बोला कि इसका फायदा क्या है, तेरे को कौन सुनने वाला है, तो तू प्रैक्टिशनर है, तेरे को फुर्सत नहीं है, तू ये क्लिनिकल वाला पार्ट छोड़ के तू क्यों ये हमारी नागपुर की भाषा में लफड़े में पड़ रहा है। मैंने बोला उसको कि नहीं, ऐसा है, हम सब लोगों ने तय किया है, संगठन ने तय किया है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि क्रिटिसाइज करने के पहले हमारा अध्ययन चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। वो कहने के बाद में उसने मुझे बोला कि ये वो CCIM देखती है, मालूम है क्या तेरे को? मालूम है, नाम सुना है मुझे, मैंने कहा तो कभी मुझे कोई काम नहीं पड़ा। तो बोले वहां तक किसी मेंबर के पास भी तेरा पहुंच गया तो बहुत हो जाएगा। अब ऐसे में कुछ दिनों बाद मुझे एक मेंबरान मिल गए CCIM के, उनको मैंने वो किताब दी। फिर उसके बाद में उस जमाने की जो अध्यक्षा थी वो नागपुर में आई थी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, वो उद्घाटन के लिए वहाँ थी, और मैं भी अब सीनियर प्रैक्टिशनर हूँ और कुछ नाम वाम भगवान की कृपा से हो गया है, मुझे भी बिठाते हैं डायस पर, तो इसलिए मैं भी बैठा हुआ था, किताब ले गया सामने, उनको दे दिया। मेरा मित्र सामने बैठा था, वो भी डीन गवर्नमेंट कॉलेज का, उसको मैंने कार्यक्रम होते बराबर देखा, देख दो चीजों को दो लोगों तक पहुंचा दी है मैंने, एक तो मेंबर की तरफ और अभी तो CCIM की जो अध्यक्ष है उनको भी मैंने दे दिया। और फिर कुछ बोला नहीं, चलो चलो देखते, बोले कितना इम्प्लीमेंट। 2015 में मैंने इलेक्शन लड़ाया, मैं CCIM पे आया खुद मेंबर, और 2018 में मैं CCIM का अध्यक्ष बन गया। अब यहाँ मेरी कोई मेहनत बेकार नहीं, मेरी कोई मेहनत बेकार नहीं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि आपको ये सब एजुकेशन पर आपको कैसे क्या बोल लेते, तो मेरी वो 2011 की मेहनत है, वो मेरी 2011 की मेहनत है। तो इसलिए मैं इसलिए शिक्षकों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसका क्या होगा, इसका क्या उपयोग, इसकी आप चिंता मत करिए, आप अध्ययन कीजिए, आप उस पर लेख लीजिए, आपका जो मत होगा उसको कहीं तो भी पब्लिश कीजिए, क्योंकि हमारे जर्नल्स आजकल निकलते हैं, केयर जर्नल, एजुकेशन के भी जर्नल्स निकलते हैं, उसमें लिख के रखिए, कब कौन सी चीज काम में आएगी बता नहीं सकते, क्योंकि जो आप लोग देख सकते हो वो आगे की पीढ़ियों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके बाद आने वाली पीढ़ियां हैं, शायद आपसे इंटरेक्शन नहीं होगा, या यहाँ पर परमानेंट रहने वाला तो कोई है नहीं, सबको जाना ही है ऊपर एक न एक दिन। तो ऐसी स्थिति में वो जो अक्षर बोलते हैं उसको, वो अक्षर रहते हैं, वो वर्ड रहते हैं, तो इस वो रहे यूनानी शिक्षा के बारे में, इसकी जिम्मेदारी आप लोग। अब इसके लिए कुछ स्कॉलरशिप भी लगती है, स्कॉलरशिप देने में पैसे की बात नहीं कर रहा, स्कॉलरशिप देने अध्ययन। अब हमारे हमारे नहीं, सभी प्रोफेशनल फील्ड का ये समस्या है कि हमारे पास एजुकेशनिस्ट नहीं रहते, हमारे पास एकेडमिशियंस रहते, हमारे पास में कोई भी M.Ed या B.Ed या इस प्रकार के या एजुकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में कोई ट्रेंड नहीं होता। हम लोगों ने CCIM में चालू किया, अभी फर्स्ट ईयर के जितने भी हमारे ये है शिक्षक है, करीब करीब सभी को हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है इसका एक बेसिक ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि ये तो ठीक है कि जो हमारा सिलेबस है वो 2030 के अनुसार होना चाहिए, लेकिन वो 2030 के अनुसार जब बनेगा तब वो पढ़ाने वाले को भी तो ये मालूम होना चाहिए कि 2030 के हिसाब से। तो इसलिए ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो ट्रेंड बाकी भी विषयों के इसमें सभी में वो आएगा और सभी को वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आज की जरूरत है। हम कल के बच्चों को पढ़ाते हैं, हम कल के बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये हम लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर टीचिंग टू नेक्स्ट जनरेशन, वी आर टीचिंग टू द फ्यूचर। और उन्होंने कहाँ जाना चाहिए, यहाँ आप लोग तय करते हैं, शिक्षक लोग तय करते हैं। शिक्षकों का दूसरा एक महत्वपूर्ण काम है, ये तो सिलेबस वगैरह वो तो सब ठीक है,
दूसरा काम है इंस्पिरेशन। आप लोग आपके विद्यार्थी के पीठ पर हाथ कैसा रखते हो, इस पर उसकी जीवन की दिशा तय होती है। इसलिए हम लोग, मैंने हमारे जो बोर्ड ऑफ आयुर्वेद और बोर्ड ऑफ यूनानी की जो अध्यक्ष है, उन दोनों को रिक्वेस्ट की है कि हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन में इंस्पिरेशन इंडेक्स भी गेज करना है। पढ़ाई बहुत है, बहुत अच्छी है, सिलेबस भी बहुत अच्छा है और ये सब होता है, लेकिन उसको इंस्पिरेशन मिलता कि नहीं। मुझे अभी हमारे वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि यहाँ के लड़के यूपीएससी पास होते, बराबर है सर। अब एक ने तो भी पीठ पर हाथ रखा, इसलिए उसको ये प्रेरणा। तो कितने यूनानी कॉलेज में के बच्चे यूपीएससी होकर आते हैं, उसमें ताकत रहती है, लेकिन पीठ पर हाथ नहीं रहता, इंस्पिरेशन नहीं रहता। तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी यानी सभी शिक्षकों। तो आज के यूनानी डे के उपलक्ष्य में मैं फिर से सबको आपको बधाई देता हूँ, और आयोजकों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरे दो शब्द रखने के लिए मुझे इजाजत दी, इसलिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। और सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए मैं दो शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत आभार के साथ सर आपका धन्यवाद। हम में से अधिकतर लोग शिक्षक हैं या यूनानी चिकित्सा के लर्नर्स हैं। सर ने अभी एक बात कही कि हमें कल के नहीं, कल के बच्चों को पढ़ाना है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व बहुत अधिक है। अधिक समय न लेते हुए मैं दरखास्त करूंगा विनम्र आग्रह के साथ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। प्लीज वेलकम आवर ऑनरेबल रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर। Respected the chief guest of today's function, Vaidya Dio Pujari ji, the chairperson of National Commission of Indian System of Medicine. Today's guest of honor, Professor Asim Ali Khan, the Director General, CCRUM. The keynote speaker, Professor Mohammad Idris, Registrar, Dean of Sumer, and distinguished guests, Dean, HODs, teacher, staff, and students. A warm good afternoon you to all present in this function of Unani Day 2022. Jamia Hamdard celebrate the Unani Day 2022 today in the august presence of our Honorable Chancellor, Janab Hamad Ahmad Sahib, our Chairperson of National Commission of Indian System of Medicine, Vaidya Jayant Dio Pujari ji, Professor Asim Ali Khan, DG CCRM, and other distinguished guests. As you all know, the Unani Day being celebrated on the birth anniversary of a great social reformer and a Unani scholar, Hakeem Ajmal Khan, who was also one of the founders of Jamia Millia Islamia. Hakeem Ajmal Khan was a versatile genius, eminent physician, social reformer, spiritual healer, a distinguished Unani clinician. Ajmal Khan was also known as Messiah Hind and the king without the crown of his eminent diagnostic knowledge and treatment therapies in Unani system of medicine. Ajmal Khan Sahab took great interest in the expansion and development of Unani system of medicine and built three important institutions. This was expanded to research, practice in the field of Unani medicine, and thus save it from extraction in India. Similarly, the founder of Jamia Hamdard, Janab late Hakeem Abdul Hamid Sahib, was also a visionary philanthropist, educationist, Unani physician of his time. He had a credit of treating nearly 3 million persons during his lifetime. Hakeem Abdul Hamid Sahib established a Jamia Tibbiya in 1935 at Gali Qasim Jan, Delhi, for providing Unani treatment to the Delhi and adjoining areas. Later in the year 1963, the Jamia Tibbiya was recherished as a Hamdard Tibbi College under Delhi University. The institute was separated to Hamdard Nagar campus in 1980 and started BUMS course under University of Delhi. Then in 89 became as Jamia Hamdard.
after the establishment of Jamia Hamdard, the TP College became a school and started adding PG courses in the college. The Hakeem Ajmal Khan was one of the founders of Delhi Jamia Millia Islamia, was appointed first chancellor of the university in 1920, served as a chancellor till his death in the year 1927. Equally on the similar line, Janab Hakeem Abdul Hamid Saab was founded Jamia Hamdard as served as the founder chancellor till his breathed his last in 1999. So I would like to state that the contribution of Hakeem Abdul Hamid Saab was not less than what was the contribution of Hakeem Ajmal Khan toward the revival of Unani system of medicine in the independent India. Hakeem help the people for healthy and stress-free life. The ancient Unani medicine system also has a potential to revive person declining health. The Unani medicine is very safe, known as efficiency, easy availability, and it is also very low cost. It would like to reiterate it is extremely crucial at this juncture to identify the significance of Unani medicine and thus propagate the benefit of its use to the people across the world so that they can get the true benefit for leading a healthy life. This day is being celebrated to create awareness about the healthcare delivery through a Unani system of medicine, through its preventive, promotive, and culturative philosophy. We all glad that the Ministry of Ayush have distributed many kits containing Ayush immunomodeling medicine for the health benefit of the people during the COVID pandemic. This has also popularized the Unani system of medicine to an extent. In today's scenario, the Unani system of medicine is being used as an immunity booster to prevent the COVID pandemic and other viruses. The Ayush Ministry supported the Unani system of medicine to take care of the healthy need of the people. We need to practice Unani medicine in a daily life to take the best possible advantage, such as stress-free, fitness, and enhanced immunity. At the end, I wish all the Unani teachers, doctors, and scientists sit together, discuss the issue of publishing the uses of Unani system of medicine to this world. Yeah, thank you. धन्यवाद साहब। सभागार में उपस्थित लोगों को अवलोकित करते हुए किसी भी आयोजन और किसी भी सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत सारे लोग उत्तरदायित्व कांधों पर उठाते हैं और उसका निष्पादन करते हैं। सो जो हमें नजर आता है, जो दिखता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनतें, बहुत सारे लोगों की काविशें होती हैं और अंततः एक औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं अपने कुल सचिव सैयद सऊद अख्तर साहब से। सैयद सऊद अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खुशी साहब। आपके बोलने के बाद तो किसी और को बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यूनानी डे के इस मुक़द्दस मौके पर मुनक़्क़िद आयोजित इस जलसे में तशरीफ लाए हुए आप तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, डिग्निटरीज ऑन द डायस, डिग्निटरीज ऑफ द डायस, ख़वातीन और हज़रात, देवियों और सज्जनों और प्यारे विद्यार्थियों, चूँकि यूनानी हमारे हिंदुस्तानी तहजीब का एक हिस्सा है तो मैं हिंदुस्तानी में ही बोलना पसंद करूंगा। आज जामिया हमदर्द के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। अहम दिन इसलिए कि मरहूम हकीम साहब ने यूनानी इलाज के लिए जो एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था, एक लकीर खींची थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए हम लोगों के बीच हकीम साहब के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने के लिए विश्व विख्यात वैद्य हम लोगों के बीच में मौजूद हैं।
खेत जारी के रूप में। ये एक हिंदुस्तानी तहजीब का ही एक हिस्सा हो सकता है कि एक हकीम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक वैद मौजूद है। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हम जामिया हमदर्द की खूबसूरती है। वैद का मतलब होता है चिकित्सक, डॉक्टर। डॉक्टर के पास लोग किस लिए जाते हैं? जब वो किसी परेशानी में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं। तो देव पुजारी साहब हम लोगों के लिए भी एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने हमारे कष्टों का निवारण किया है, हमारे दुखों का निवारण किया है, और जब हम तकलीफ में थे उस तकलीफ को दूर करने में उनकी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने अभिभाषण में दो चीजों की तरफ इंगित किया है, एक शिक्षकों की भूमिका, एक विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हुई है कि जामिया हमदर्द ने इस पहलू पर जो आपने आज रोशनी डाली है, पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। हमारे विद्यार्थी यूनानी के जो भी अमली चीजें हैं उसे जमीनी हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं, किताबों की दुनिया को दुनिया में लाने की कोशिश करते हैं और उसे अपने जीवन में हासिल करने की कोशिश करते हैं। और हमारे शिक्षक जो यूनानी के हैं वो उन्हें कल के लिए तैयार भी करते हैं और उसके लिए वो अथक परिश्रम, अथक प्रयास दोनों करते हैं, जो कि हमारे विद्यार्थी एक नई रोशनी देख सके और नई मंजिल को हासिल कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ उपस्थित हुए और तशरीफ लाए। हमारे गार्जियन के रूप में हमारे सरपरस्त जनाब मोहतरम जनाब हमाद अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, जिनकी सरपरस्ती, जिनकी प्रेजेंस ही हम लोगों को एक नई ताकत दे रहा है, एक नई ऊर्जा देता है। हमें मालूम है कि हमें जब भी कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो जिसकी तरफ हम देख सकते हैं कि हमारे मुश्किलों को आप आसान करें, हमारी मुसीबतों को दूर करें, वो है जनाब हमाद अहमद साहब। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें जनाब हमाद अहमद साहब जैसा चांसलर मिला है, जो हम लोगों को इस यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी गाइडेंस दे रहा है, अपना मार्गदर्शन दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमेशा हम लोगों के लिए मौजूद रहते हैं। मैं इस मौके पर हम लोगों के बीच के ही प्रोफेसर आसिम अली खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो जामिया हमदर्द के हिस्सा थे, जामिया हमदर्द के हिस्सा हैं और जामिया हमदर्द के ही हिस्सा रहेंगे। और वो हमेशा, कुछ लोग जो हैं वो पर्दे के पीछे काम करते हैं, तो आसिम अली खान साहब वो शख्सियत हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रह के जामिया हमदर्द के लिए खड़े रहते हैं। और जामिया हमदर्द को जब भी किसी मदद की जरूरत होती है, कभी किसी मुश्किलों को आसान करने के लिए जरूरत होती है, तो उसके लिए वो हमेशा मौजूद रहते हैं। कुछ लोग समस्याएं ढूंढते हैं, कुछ लोग समस्याओं में समाधान निकालते हैं। तो आसिम अली खान साहब वो हैं जो समस्याओं में समाधान निकालते हैं और मुश्किलों को आसान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स आपका, धन्यवाद आपका कि आप आए और आप हमेशा हमें ऐसे ही अपनी सरपरस्ती से, अपने मार्गदर्शन से रास्ता दिखाते रहे। प्रोफेसर इदरीस साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही कि एक यूनानी डॉक्टर का फर्ज ये है कि वो मरीज को सिर्फ मरीज नहीं देखे, इंसानियत का जज्बा उसमें हो। तो यूनानी की खासियत यही है, हमारे मरहूम हकीम साहब की भी खासियत यही थी कि उन्होंने इंसानी हकूक को ज्यादा तरजीह दी बनिस्बत अपने पेशा की, और उन्होंने जो भी काम किया वो इंसानी जरूरतों को ध्यान में रख के, इंसानियत को जरूरत को ध्यान में रख कर किया, और जिसकी वजह से आज ये जामिया हमदर्द जो वजूद में आया है, उनके इस इंसानियत का ही पैमाना था जिसे उन्होंने एक अमली जामा पहनाया। और प्रोफेसर इदरीस साहब ने जो बातें कही, वो सारी चीजें हम लोगों को अपनी जिंदगी में सिर्फ यूनानी मेडिसिन की ही नहीं, हमारे जिंदगी में भी वो हकीकत है कि हम इंसानियत का एक तजुर्बा पेश करें लोगों के सामने में, और एक नमूना पेश करें लोगों के सामने में, और जिंदगी कैसे जी जाती है उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इदरीस साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को बताई।
अब अगर मैं अपने वाइस चांसलर साहब का जिक्र नहीं करूं तो मैं फेल करूंगा अपने ड्यूटी में। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर अफशार साहब वो शख्स हैं जो यहाँ जामिया हमदर्द के टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स की तकलीफों में खुद तकलीफ में रहते हैं, उनके खुशियों में खुद शरीक रहते हैं। उनकी मुसीबतें जब आती हैं तो उसे अपनी मुसीबत समझते हैं, उनको जब कोई तकलीफें आती हैं तो उसे अपनी तकलीफ समझ के उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूनानी डे का ये जलसा है और इस मौके पर मैं आप तमाम लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो अभी सुमेर में अभी हमारे लिए कुछ दिक्कतें आई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे नए कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए इस साल के लिए, तो लगा था कि उनके घर में किसी तरह की ट्रेजेडी हो गई है, इस तरह से वो परेशान थे और कैसे इसको दूर किया जाए, इसके लिए वो दिन रात में शायद सोते भी होंगे तो ख्वाब में उनको सुमेरी याद आता होगा, यूनानी मेडिसिन ही याद आता होगा, या वही ख्वाब वो देखते होंगे कि इसको सुबह में जब ऑफिस आते तो पहला काम उनका यही रहता था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और शाम में घर जब जाते थे कि इसमें हम लोग अब आगे कल क्या कर सकते हैं, कैसे इसको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि हमें ऐसा एक विजनरी वाइस चांसलर मिला है जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों की खुशियों में खुश होता है और दूसरों को ऊंच मंजिल तक पहुंचने में अपनी कोशिश करता है कि वो जो उसके एपिटोम ऑफ एफिशिएंसी है, जो उसकी मंजिल है, उसको हासिल कराने में मैं कैसे मदद कर सकूं और उसको वहां तक कैसे पहुंचा सकूं, उसलिए उनके दिल में हमेशा दर्द रहता है। वी आर वेरी लकी टू हैव अ वाइस चांसलर लाइक हिम, जो कि जामिया हमदर्द को हमारे चांसलर साहब ने, हमारे स्पॉन्सरिंग बॉडी ने जो एक जिम्मेदारी उनको सौंपी है, उनके सरपरस्ती में जामिया हमदर्द दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो हकीम साहब का ख्वाब था उसको हम लोग पूरा करने में कैसे मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी सरपरस्ती हमें हमेशा ऐसे ही मिलती रहे और जामिया हमदर्द हमेशा ही तरक्की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे आरिफ जैदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, डीन सुमेर, और इन्होंने भी जो अभी के कुछ मुश्किल दिन आए थे, इन्होंने भी उसके लिए काफी मेहनत की और हमेशा कैसे इन तकलीफों को दूर किया जाए, कैसे कमियों को दूर किया जाए और कैसे यूनानी मेडिसिन को हम लोग आगे बढ़ा सके, हमेशा इसके लिए इन्होंने कोशिश की। और जो भी कमियां या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको कुछ बताया जाता था, ये इन्होंने हमेशा बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ उसे पूरा किया और आरिफ साहब और इनके पूरे फैकल्टी मेंबर्स के ही कोशिशों का नतीजा है कि हमें कल रात में अच्छी खबर भी मिली और हम लोग सभी चैन की सांस लेने में कामयाब हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जैदी साहब आपका भी। मैं इस मौके पर अपने तमाम डीन ऑफ स्कूल्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ लाए और काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, सारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए हैं, हमारे पुराने गेस्ट बैठे हुए हैं। शाकिर जमील साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा कि आप हम लोगों के बीच हैं, आप आए हैं तो हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। आप ऐसे लोग आते हैं तो हम लोगों की इज्जत बढ़ती है, हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हम जिंदगी में और कुछ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सारे फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खासकर खुर्शीद साहब थे, अकरम साहब हैं, उज़मा बानो हैं, सीमा रानी जी हैं जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं हमारी, फरकुंदा जी हैं, डॉक्टर सादिया हैं। तमाम लोगों की कोशिशों के बाद ये आज का जलसा जो है कामयाब हो सका है। और सबसे आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम स्टूडेंट्स का, हमारे प्यारे विद्यार्थियों का, कि जिस सिंसियरिटी के साथ में आप इस प्रोग्राम में बैठे रहे, उतना तो शायद आप लोग अपने क्लासरूम में भी नहीं बैठे रहते होंगे। और क्लासरूम हमेशा स्टूडेंट लाइफ में आदमी हमेशा स्टूडेंट जो है 40 मिनट का क्लास होता है तो उसे बंक करने की कोशिश करता है, छोड़ के जाने की कोशिश करता है, या छुप के नीचे से छुप के निकल जाने की कोशिश करते हैं कि मेरे टीचर की नजर उस पर नहीं पड़े। पर यहाँ मैं देख रहा हूँ किसी स्टूडेंट ने ये कोशिश नहीं की कि वो छुप के नीचे से निकल जाए। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स का भी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे पर्दे के पीछे के लोग हैं,
उनका, खास के प्रेस और मीडिया से आए हुए तमाम साथियों का। सुधीर सिंह साहब हैं जो डायरेक्टर हैं दूरदर्शन के, उन्होंने भी अपनी पूरी टीम यहाँ भेजी हुई है। प्रेस और मीडिया के बहुत सारे साथी आए हुए हैं और आपके वजह से ही जो कुछ हम कर रहे हैं ये लोगों तक पहुंचता है। तो जो हम में कमियां हैं आप वो भी बताएं, और पर हमारी गुजारिश ये भी है कि जो हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें भी हो रही हैं, वो भी लोगों के सामने लाने में आपका हमेशा हम लोगों को सहयोग मिला है। इसलिए हम हमेशा आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सिस्टम एनालिस्ट ने हमें पूरे दुनिया से जोड़ा है, जो कंप्यूटर की टीम है उन लोगों ने हमें जोड़ा है, हाउस कीपिंग की टीम ने इस हॉल को बहुत अच्छे से रखा है, हमारे स्टेट एंड मेंटेनेंस की टीम ने इस हॉल को बहुत अच्छे से सारी चीजों को तरीके से मुहैया कराई है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप तमाम लोगों का, जो जिन लोगों ने मेरी इस वाणी को सुना है, मेरी इस बोली को सुना है और बहुत ही सब्र के साथ सुना है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं सभी लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपनी सीट में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान का समय। जय गण मन दिया भाग्य विधाता पंचाल से गुजरात कल बंगा विंध्य हिमाचल उच्चल दशुपना में जागे तब शुभ शिष्य गाथा जब भाग्य विधाता स्टेज पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए बैठे, एक संयोजक समिति के साथ फोटो। और आप लोग बाहर गैलरी में हमारे साथ चाय ज्वाइन करिए।
एक खेले दो ना उनका वाला रजिस्टर साहब के